Scope rules. In Python, a scope is a region of a Python program where a namespace is directly accessible. The location where the names are assigned in the code determines the scope of visibility of the name in that code. Although scopes are determined statically during creation of the program, yet they are used dynamically, that is, during execution of the program. At any time during execution, there are at least four main things to remember in the context of scope rules. तो यहाँ पर scope rules सीखेंगे with an example. In Python, names of all types of variables are treated in same manner. That means number, strings, functions, types, modules, classes, all are treated in the same way. Also, a name can refer to only one thing at a time. For example, consider the following program. यहाँ पर प्रोग्राम को ध्यान से देखिए. पहली बार where एक वेरिएबल लिया गया है और इसमें जो वैल्यू असाइन की गई है 10 + 5 है. इसके बाद प्रिंट where की वैल्यू को प्रिंट कराई गई है. तो अभी where जो कनेक्टेड है 10 + 5 से कनेक्टेड है. उसके बाद def where एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, इसका नाम भी where है और इसमें एक पैरामीटर है y. इस फंक्शन को कॉल करने पर रिटर्न y जो भी पैरामीटर पास किया गया है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा और रिटर्न हो जाएगा. उसके बाद जो where की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी. where फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी. तो अभी जो where है कनेक्टेड है फंक्शन से इस ब्लॉक में. अब where जो है इस 10 + 5 से कनेक्टेड नहीं है. अगली बार where हमने एक वेरिएबल लिया और इसमें स्ट्रिंग असाइन कर दिया. उसके बाद प्रिंट where किया तो यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा. अब जो where है फंक्शन से कनेक्ट नहीं है और इस 10 + 5 से कनेक्टेड नहीं है. Explanation. In the code given above, the variable where is bound to 15, 10 + 5. Then def where y binds where to function. The previously binding of where to 15 is lost and is repeated by the function. Thereafter where is bound to a string, so it is binding with the function no longer existing. तो यहाँ पर समझना है कि where अभी जो 10 + 5 से बाइंड हुआ है, फंक्शन where डिक्लेयर करने के बाद इस where की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है. अब where यहाँ पर एक फंक्शन के रूप में क्रिएट होता है और यहाँ पर where में हेलो असाइन करने पर फंक्शन की आइडेंटिटी एज ए फंक्शन खत्म हो जाती है. The scope of a variable is its enclosing function of class or life. As discussed below, each name belongs to a namespace. For example, if a variable is created in a particular function, then its scope is that function only. Since that function creates its own namespace where it resides, so any variable inside the function will be local to that namespace. In the following example, the scope of the variable is x is the test function. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेस्ट फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू 5 असाइन है और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट की गई है. Now let us modify the program. अब हम प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं. x = 10 यहाँ पर असाइन किया, डेफ एग्जाम फंक्शन डिक्लेयर किया और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट हो रही है. डेफ टेस्ट किया, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, प्रिंट x किया. डेफ मार्क्स, यहाँ पर x एज आर्गुमेंट ले लिया, x की वैल्यू प्रिंट हो गई. प्रिंट x
फंक्शन के बाहर यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट की जा रही है। एग्जाम फंक्शन को कॉल किया है, टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है, मार्क्स फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर एज आर्गुमेंट 20 पास किया। ऑन एग्जीक्यूटिंग द above कोड द आउटपुट विल बी 10 10 5 20. The first line creates a variable x that belongs to the namespace of the file, so its scope is the entire file. तो पहले x का स्कोप जो है एंटायर फाइल में होता है। जैसे ये x सबसे पहले डिक्लेयर किया गया है, पूरा फाइल के ऊपर डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इसका स्कोप एंटायर फाइल होता है। हेंस 10 इज डिस्प्लेड। अब यहाँ पर 10 को डिस्प्ले किया जाता है। द एग्जाम फंक्शन क्रिएट्स इट्स नेम स्पेस, but that namespace doesn't have any x in it. As Python defined x there, it checks the next larger enclosing namespace and finds x. So exam uses the variable x defined at the top and displays 10. यहाँ पर देखिए टेस्ट फंक्शन क्रिएट किया गया है, x इक्वल टू 5 है और यहाँ पर प्रिंट x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है लोकली अवेलेबल जो 5 डिक्लेयर किया गया है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ 5 जो है प्रिंट हो जाएगा। डेफ मार्क्स x, यहाँ पर जो वैल्यू पास कर देंगे वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू 5 प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर 20 प्रिंट हुआ है। The first line creates a variable x that belongs to the namespace of the file, so its scope is the entire file, hence 10 is displayed. The exam function creates its namespace, but that namespace doesn't have an x in it. As Python doesn't find x there, it checks the next larger enclosing namespace and finds x. So exam uses the variable x defined at the top and displays 10. तो यहाँ पर एग्जाम फंक्शन को देखिए, एग्जाम, तो यहाँ ये 10 प्रिंट करेगा, इसका टेस्ट फंक्शन है। However, the test function defines its own variable named x with the value 5, which has the higher priority over the first definition of x. So any mention of x within the test function will refer to that x, hence displaying 5. The marks function also has x in its own namespace, just like test function has. So x gets bound to whatever value is passed as an argument to marks function, 20 in the given example. Hence the outer x is shadowed again in the function, displayed the output as 20. The names always belong to the namespace where they are bound, irrespective of whether they are bound before or after they are referred. This is the creation which makes Python a lexically scoped language. The variable scope are determined entirely by the location of the variables in the source code of your program files, not by function calls. If a binding for a variable appears anywhere inside a function, the variable name is local
to that function. Let us understand this with the help of an example. X is equal to 10. Def function 1, x equal to 50, print x. यहाँ पर x ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पर फंक्शन 1 है, x की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर 50 प्रिंट होगा. डेफ फंक्शन 2, यहाँ पर x की वैल्यू 25 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 25 ही प्रिंट होनी चाहिए. डेफ फंक्शन 3, यहाँ पर p, जो भी p की वैल्यू पास की जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी. p लेस देन 10 है, p लेस देन 10 होने पर x की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और यहाँ पर 2 जो है x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट होगा. In the above example, the function 1 function creates a local variable x in the own namespace, subduing the outer variable x. So the line print x print 50. The function 2 function also has a local variable x in its namespace, but the assignment to x is after the print statement. The local variable x shadows the outer x even though the local x is initially not bound to anything. The line print x looks for x in the local namespace, finds that it is not bound to anything, and so the reference to x leads to an error. An unbound local error occurs. Similarly, in function 3, the variable x is local. When we call function 3 20, the line x equal to 2 is not executed, so print x causes an error. But when we call function 3 5, the line x is equal to 2 is executed, so print x prints 2. Names declared with local global keywords have to be referred at the file level. This is because the global statement indicates that the particular variable lives in global scope. If no global statement is being used, the assignment to the name is always in the innermost local scope. Consider the following example. X is equal to 5. This is a global variable. Definition: function 1. X is equal to 2. This is a local x. X is equal to x plus 1. So x is incremented by 1 here. Def function 2, global x, यहाँ पर global x क्या है 5 यूज होगा. x is equal to x plus 1 मतलब की वैल्यू अब 6 होगी. print x, यहाँ पर global x प्रिंट होगा. function 1, यहाँ पर x की वैल्यू 3 प्रिंट होगी. print x, x की वैल्यू global 5 प्रिंट होगी. function 2, यहाँ पर global x 6 प्रिंट होगा. print x, यहाँ पर global x वैल्यू 5 प्रिंट होगी. The above example prints 5, then calling function 1 it prints 3. This is because function 1 only increments a local x, then function 2 increments the global x and prints 6. Legb rule. From the examples discussed above, we come up to the Legb rule. According to this rule, when a name is encountered during the execution of the program, it searches for that name in the following order. L. Local. It first makes a local search, that is in current definition statement. The import statements and function definitions bind the module or function name in the local scope. In fact, all operations that introduce new names use the local scope. E. Enclosing functions. It searches in all enclosing functions from inner to outer.
G. Global module. It searches for global module for names declared global in a def within the file. B. Built-in Python. Finally, it checks for any built-in function in Python. The examples given above gives the output according to the Legb rule only. Defining classes. We have already studied in the previous chapter that a class is a unit that encapsulates data and its associated function. In this function or section, we will learn how to define classes. To define class in Python, we need to just define the class and start coding. A Python class starts with the reserved word class followed by the class name and a colon. The simplest form of class definition looks like this. Class name, colon, statement 1, statement 2. Everything in a class is intended after the colon. Just like the code within the function, if statement or for loop, the first thing not intended if not part of the class definition. A class may contain attributes which can be data, members, and member functions, that is methods. In fact, the word attribute is used for any name following a dot. Let us take the example of class test. Class test var equal to 50, marks equal to 10, def displays function. In the above class definition, marks var display all the attributes of the class test and also of all its objects. Similarly, when we import module in the expression, module 1, function name module 1 is a module object and function name is a method, but also referred to as an attribute of module 1. The module attributes and the global names are defined in the same namespaces. You will learn about object creation and usage later in this chapter. Class definitions like function definitions using def statements must be given before they are referenced. For use, when a class definition is entered, a new namespace is created and then used as local scope. Hence, all assignments to the local variables are attached with this namespace. The function definitions are also bound to the same namespace. Attributes of a class may be read-only or writable. In the latter case, assignment to attributes is possible. That means the following statement is valid. Test1 dot marks equal to 10. Writable attributes may also be deleted using the del statement. For example, del test1 dot marks. The above statement will remove the attributes marks from the object named test1. In fact, the del statement removes the binding of the attributes marks from the namespaces test1 referenced by the class local scope. When a class definition is left normally via the end, a class object is created. This is basically a wrapper around the contents of the namespaces created by the class definition. We will learn more about class objects in this next section. Note that calling a method on an object can also change the object. This implies that an object is mutable. A function can modify an outer mutable object by calling a method on it. Consider the example below.
x is equal to 10. Def list x, x dot append 20. Def add list function, x is equal to 30 40. X dot append 50. Print x list ex function, print x add list function, print x. The above example prints 10 10 20 30 40 50. The list x function calls the append method of the global x w, whereas the add list function x refers to a local x. Also, data attributes override method attributes with the same name. That means if the data attributes of the class and the method attributes are in same scope, then the data attribute will be given higher priority. So to avoid accidental name conflicts, we may use convention like capitalize method names, prefixing data attributes names with a small unique string, generally an underscore, using verbs for methods and nouns for data attributes.